We should begin. There are a couple of you here, and I would want the class to be more interactive. Just tell me wherever you feel there's a problem. Okay. Sequences questions come up in detail when they come up in paper two, so you can see a lot of parts there. They are typical parts. You might see a table. You might be asked to fill a table or draw a pattern in this case. We'll be talking about all of that. But first, I want to show you what sequences really look like, and this question sort of highlights what I'm trying to say here. Okay, जब sequences के अंदर numbers होते हैं, so they are pretty easy to calculate. If I ask you, let's ignore the other parts of this question, and I ask you just this, okay, what is let's look at this sequence. And generally what you do is you think about what is being added and subtracted. So you realize कि ये plus 6 हुआ हुआ है, ये भी plus 6 हुआ हुआ है, ये भी plus 6 हुआ हुआ है, ये भी plus 6 हुआ हुआ है. So अगला भी जो होगा वो plus 6 करके ही आएगा. So you can then tell me that the next term should be 31 and then 37 and then 43 and so on. So when it's about numbers, it's easy to calculate. Okay, let's look at another sequence that's given at the bottom, and then I'll explain to you what the difference between these sequences is. Okay, let's look at the next sequence that's given here. I'm not talking about the question per se right now. I'm just talking about the numbers that are given to me here. Okay, let's look at this next sequence. This is k plus 3y. This is plus 5y. This is plus 7, plus 9. You again see a pattern emerging, right? So the next term must be plus 11. So I will get 40 out of this, then plus 13. Okay, so when it's about numbers, it's just about calculating the difference between these numbers, and I would recommend that you write it like that so that you clearly see कि क्या add subtract करना है. A lot of you have this habit कि you start doing everything on a calculator. Yes, it's fine if you do everything on a calculator, but remember that at the end of the day आपने जो है वो आंसर करेक्ट देना है, बिकॉज ये 1 मार्क तभी मिलेगा जब आप परफेक्ट आंसर देंगे. सही है, वरना नहीं मिलेगा. There is no point in making a mistake on the calculator. Okay, let's look at this one as well. ये भी plus 3 हुआ. अच्छा, माइनस भी हो सकता है. अभी कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता. So again, this is something that जिसमें addition subtraction हो रही है. Okay, so again, next term निकालना आसान है. I can tell you that the next term will be plus 11, so 33, and then plus 13, so 46, and so on. Okay, so these are the two types of sequences that are generally there on the paper. All bhi hoti hain, but I can't really make this class exhaustive in terms of all the types of questions that are there, but I can tell you the more frequently asked ones. So you see that I am now dealing with sequences that make sense. मुझे numbers नजर आ रहे हैं, या तो 3, 5, 7, 9, 11 थे, या यहाँ पे consistently जो था वो plus 6, plus 6, plus 6 हो रहा था. सही है. तो इन दो सीक्वेंसेस की बेसिकली टाइप्स होती हैं. पहली टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक लिनियर सीक्वेंस है. व्हाट इज अ लिनियर सीक्वेंस? अ फिक्स्ड नंबर called the common difference is added or subtracted to find the next term. So let's say अभी ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई थी वो ऐसी लिखी हुई थी 1, 7, 13, 19, 25, और हमने दो टर्म्स निकाली थी. हमने निकाली थी 31 एंड 37. क्या हो रहा था इस केस में? इस केस में जो हो रहा था वो plus 6 हो रहा था. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस केस में मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन डिफरेंस था plus 6. plus 6. ओके, अब नंबर्स निकालना मुश्किल नहीं होते. मैं आपसे अगला नंबर पूछूं आप निकाल लेंगे. मैं इससे अगला नंबर आपसे पूछूं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट टू. सही है. असल प्रॉब्लम कब आता है? जब ये ऐसा सवाल होता है जो आपसे ये पूछता है, वो कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न n. सो एक अननोन पैटर्न वो आपसे पूछ रहा होता है. वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा होता है? nth टर्म पूछ रहा होता है.
Okay, so nth term for a linear sequence has a formula. Nth term for a linear sequence has a formula. क्या formula होता है? वो formula ये होता है, and I would want you to write it down if you can. It's first term plus common difference into n minus 1. यानी अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा फर्स्ट टर्म इज 1, द कॉमन डिफरेंस वाज 6 एंड आगे जो होगा वो हमेशा n माइनस 1 आ रहा होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6n माइनस 6. दैट गिव्स मी व्हाट? 6n माइनस 5. ओके, दैट्स द nth टर्म. कि आपने कोई भी आगे टर्म निकालनी हो, मैं आपसे अगला पार्ट कहूं कि फाइंड the 100th term in this sequence, तो आपने सिंपली क्या करना होगा in this sequence? तो आप कहेंगे कि सिंपली सर क्या करें कि 6 times 100 minus 5 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा. Okay, so that is how you use the nth term. As long as you remember the formula, you will be able to calculate the nth term. ये आप कब करेंगे? जब आपके पास linear sequence होगी और ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ये कंसिस्टेंटली सेम आ रहा होगा. Okay, any questions at this point? Should I show you this in a past paper question? Let me show you this in a past paper question. ये देखें, ये मैंने ये वाला exactly सवाल सॉल्व कर दिया आपके लिए. उसने कहा कि find an expression in terms of n for the nth term. तो मैं कहूँगा nth term का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे पता है, it's first term plus common difference into n minus 1. सही है? तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म 1 है, ये फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ 6 times n minus 1, क्योंकि मैंने यही सवाल ले लिया था तो यही आ रहा है मेरे पास. ओके, ये बन गया 6n minus 5. ओके, ये n minus nth टर्म आपकी आ गई. ये मुझे क्यों पता था? क्योंकि ये लिनियर सीक्वेंस मैंने डिराइव कर ली थी कि भाई ये एक लिनियर सीक्वेंस है. दूसरी कौन सी सीक्वेंस होती है अभी मैं बात करता हूँ उसके बारे में. I'll talk about the next sequence. पहले ये वाला देख लेते हैं. कहता है एक्सप्लेन व्हाई 251 इज नॉट अ टर्म इन दिस सीक्वेंस. क्या 6n minus 5 जो है वो 251 हो सकता है? चेक कर लेता हूं मैं. ये बन रहा है 251 plus 5. क्या 256 डिवाइड बाय 6 एक होल नंबर आता है? नहीं, ये 42.6 आ रहा है. तो मैं कहूंगा कि सिंस n is not a whole number, 251 is not a term in the sequence. Okay, does everybody understand linear sequences? Any questions on linear sequences? फिर मैं आपको दूसरी सीक्वेंस बताता हूँ जो कॉमन होती है. Okay, so the next type of sequence is called a quadratic sequence. अब मैं quadratic sequence बनाता हूँ. मुझसे जरा सा टाइम लगेगा इसको कंस्ट्रक्ट करने में because I'm thinking about numbers. Okay, सही है. अब मैं इसके डिफरेंसेस कैलकुलेट करने जाता हूँ. +3.
plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Do you see that the differences are growing? सही है? The differences are growing. इनको हम कहते हैं कि these are the first level differences. सही है? हम कहते हैं कि quadratic sequences are sequences where to obtain each subsequent term a linear sequence is being added. सही है? कि ये देखिए ये नीचे एक linear sequence add हो रही है कि I'm trying to add numbers to it. Can you give me a moment? I have a phone call coming in. Okay, sorry. तो इससे हम क्या करते हैं? Whenever you have a question where you get first level of differences, you calculate another level of differences. आप कहते हैं कि जब इसका दूसरा level निकाला जाए तो ये जो होता है एक same आ जाता है. This is the second level difference. सही है? ये क्यों important है? अब अगर आगे number निकालना हो तो number तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ. सही है? क्या आपने कहा +11 हुआ, इसके बाद +13 करना होगा, कोई मसले की बात नहीं है. आप +13 कर दें, 50 आंसर आ जाता है. नंबर निकालना मसला नहीं होता. हम कहते हैं कि nth टर्म निकालना जो होता है वो प्रॉब्लम होता है. nth टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. nth term of a quadratic sequence is, now look at this formula carefully. It says first term plus first level difference into n minus 1 plus second level difference divided by 2 into n minus 1 into n minus 2. Now I understand that you might not have done this formula or you might have done it differently. I understand that, but I am teaching you right now a formula that if you remember, you will be able to solve most questions. कभी कभार questions इसके बगैर भी solve हो जाते हैं. मैं इसके बगैर भी आपको solve करके दिखाऊंगा. That's not a major issue. But some questions will only get solved when you remember this formula. सही है? अब मैं आपको formula लगा के दिखाता हूँ. What was my first term? My first term was 2. What was my first level difference? And that was +3. So yeah, into n minus 1. What is my second level difference? It's 2 divided by 2, n minus 1 into n minus 2. Okay, if I expand this, does anything else cancel out? I'm just trying to show you what the final number will be. 4 minus 1, n square plus 1. So yeah, so that's the formula for the nth term of this sequence, n square plus 1. So this formula will always work as long as you remember the formula. Okay, so in order to find the nth term of a quadratic sequence, apply this formula. I'm going to show you how to use this in a question. Say, I hope you've written it or taken a screenshot or something. I'm going to share the PDF later on when I'm done with the questions. Okay, this says complete the pattern. This is a 12-mark question. Okay, it says complete the diagram for pattern 4. Okay, so I have to complete the diagram for pattern 4. Can you see the
diagram for pattern 4. I'm going to shade this one. I'm going to shade this one. Now it's important to also shade correctly. ये 3 आ रहे थे, अब क्रॉस में 4 आ रहे होंगे. मैं हर साइड से जो है वो क्रॉस में 4 शेड कर देता हूँ. हर साइड से क्रॉस में 4 शेड कर दिए मैंने. So here to make it easy, I'm just doing the cross shading first, and then मैं देख लूंगा कि मुझे और क्या शेड करना है. अभी मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला आपको दोबारा दिखाऊंगा, मैं अप्लाई करूंगा अभी सवाल में. ओके, डोंट थिंक दैट आई स्किप्ड इट, आई विल गो बैक टू इट. ओके, 1 2 3 4 और बीच में जो है वो 3 3 के बॉक्स आ रहे हैं ना. सही है, तो 3 का बॉक्स आ जाएगा मेरे पास. Okay, so I've completed the pattern for diagram 4. Number of gray tiles. अब या तो मैं काउंटिंग कर सकता हूँ या मैं अपना पैटर्न देख लूँ ना. ये +4 हुआ था, ये भी +4 हुआ था, तो आगे भी +4 ही होना चाहिए. ये कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा. कैन आई ऑल्सो काउंट के 22 हुए थे? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and then 6 more, so 16 plus 6 gives me 22. So yeah, I think that makes sense to everybody. Number of white tiles, I don't think there's a pattern involved with it because there's a lot of number of white tiles. What I can do is I can think of the entire box and subtract the gray tiles and end up with the white tiles. I don't really need to count the number of gray tiles. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं 110 minus 22 आपसे कह रहा हूँ. हो सकता है कोई पैटर्न भी बन रहा हो. I'm not absolutely sure, but मुझे नजर आ रहा है कि आसान कैलकुलेशन है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ. अब पैटर्न नंबर 5 बना हुआ नहीं है. कैन आई से दैट पैटर्न नंबर 5 शुड आल्सो हैव +4? 26 हो जाएंगी. 156 minus 26 कितनी होती है? 130 होती है. सही है, तो टेबल कंप्लीट करना और नंबर्स निकालना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता. आई थिंक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल विद दिस एज लॉन्ग एज यू हैव डन अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, it says find an expression for in terms of n for the number of gray tiles. तो gray tiles वाला पैटर्न मैं पहले लिख लेता हूँ. क्या मैं पहले ये डिटरमिन कर सकता हूँ कि is this a linear sequence or a quadratic sequence? मैं क्या करूँ? डिफरेंसेस देखता हूँ जो पहले मैंने निकाले हुए भी हैं. What do you think? Is this a linear sequence or a quadratic sequence? Who can tell me? Is this linear or quadratic? It's a linear sequence. So yeah, it's a linear sequence. Most of you are telling me that. So what I'm going to do is I'm going to say nth term for linear sequence. मैं अपना formula याद करूं. क्या होता था? I don't have space to write down the formula, so I'm just going to go back and look at it. It says first term plus common difference into n minus 1. So first term. What's the first term? First term is 10. What's the common difference? It's 4. मैंने भी निकाला हुआ है into n minus 1. I can leave it like that, or I can also simplify it and then tell you that it is 4n plus 6. My nth term is 4n plus 6. तो देखें, फॉर्मूला याद रखने के 2 मार्क हैं. अगर आपको फॉर्मूला याद है आप फौरन से लगा सकते हैं. उसने कहा पैटर्न x, ये पैटर्न n था. अब पैटर्न x has 110 gray tiles. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4x plus 6 should equal 110? I'm talking, पहले मैंने पैटर्न n का फॉर्मूला निकाला ना. I'm talking about पैटर्न x. तो मैंने n की जगह x लिख दिया. That's 26. Okay, the 26th pattern will have 110 gray tiles. Okay.
Okay, it says by considering the number of tiles along the outer edges of each pattern, सही है, show that the total number of tiles in the pattern n is this. अब total number of tiles in the pattern की बात हो रही है, तो पहले मैं सीक्वेंस को लिख लेता हूँ अपने पास. मैंने कहा 20, 42, 72, 110, 156. कैसी सीक्वेंस है ये, चेक करते हैं. +22 हुआ, +30 हुआ, +38 हुआ और प्लस उसके बाद 46 हुआ है. Is this a quadratic sequence? Let me check again. मैं इसको चेक करता हूँ. अगर ये दो लेवल ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक होगा. सो मैंने ये डिटरमिन कर लिया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड सा होता था. मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ. सही है, लेट्स लुक एट दिस. इट सेज फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट लेवल डिफरेंस इनटू n-1. पहले इतना लगा लेते हैं. फर्स्ट टर्म प्लस first level difference, which is 22 into n-1, plus second level difference divided by 2 into n-1 into n-2. Second level difference is 8 divided by 2 into n-1 into n-2. Okay, let's see if it boils down to 4n square plus 10n plus 6. आता है या नहीं आता, मैं करके देखता हूँ. ये बना 22n minus 22 plus 4 times n square minus 2n minus n plus 2. अच्छा, ये बन गया 22n minus 2 हो गया. ये बना 4n square minus 12n बनेगा plus 8 बनेगा. So 4n square plus 10n plus 6. See, I got my answer. If I didn't know the formula, I wouldn't have gotten my answer. I have proved to you that a quadratic sequence will have the nth term that follows this formula that I've written down for you. सबको application समझ आई? Any questions at this point? Any questions? Okay, no questions so far. It says hence find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n. How many of you knew this formula from before? Did anyone know the formula from before? Okay. Okay, sometimes you will also be able to do questions without the formula, and we're going to talk about it. अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में. So ये कहता है कि hence find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n. So अब मैंने white tiles पहले कैसे निकाली थी? White tiles मैंने निकाली थी total tiles minus grey tiles करके. तो क्या मैं अभी भी यही कर सकता हूँ? Can I also find the nth term like that? ये grey tiles के nth term का formula है. ये total tiles के nth term का formula है. So can I simply tell you that 4n square plus 10n minus 6 minus bracket 4n plus 6. तो ये बन जाएगा 4n square plus 10n minus 6 minus 4n minus 6. तो ये आसान हो गया. अगर मैं इसको अभी भी ये वाला फॉर्मूला लगा के करता कि मैं सिर्फ इसको उठा लूं और मैं अपनी कैलकुलेशंस करूं तो भी देखिएगा सेम आंसर आता है. लेट मी जस्ट शो यू दैट इज वेल. मैं इसको नीचे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे कि अगर ये आप सीक्वेंस ले लेते वाइट टाइल्स की भी
10, 28, 54 and 88. 10, 28, 54 and 88. 10, 28, 54 and 88. अगर मैं इस सीक्वेंस पे वही फॉर्मूला दोबारा लगा लूँ ना तो भी देखिएगा सेम आंसर आएगा. तो मैं कैलकुलेशन अब मेरी मर्जी है, मैं जैसे भी कर रहा हूँ. ये 18 है. What's 54 minus 28? 26. 88 minus 54 is 34. ये एक लेवल ऑफ डिफरेंस हो गया, ये दूसरा लेवल ऑफ डिफरेंस है. ये देखें तो इधर भी यही फॉर्मूला लग सकता था. nth टर्म का मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि जी मेरा आंसर सेम आएगा जिस स्ट्रैटेजी से मैंने पहले किया है और जिस स्ट्रैटेजी से मैं अब कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म plus first level difference into n minus 1 plus second level difference divided by 2 into n minus 1 into n minus 2. 10 plus 18n minus 18 plus 4n square minus 3n minus 2 ये बनता है. मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले भी किया हुआ है. ओके 4n square plus 6n minus 16 ही minus 12 बना था. मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है यहाँ पे? आई थिंक आई हैव डन अ कैलकुलेशन मिस्टेक. कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है? Can somebody spot the error that I've made? This should give me the same answer as the one before. So यहाँ पे कुछ error है. I think I made an error here. Then I made an error here as well somewhere. Oh, my bad. ये रहा, ये +2 है. So that gives me the same answer. Okay, sorry, I made a silly calculation error because I rushed through it. So it gives me the same answer, 4n square plus 6n, और यहाँ पे भी आ रहा है 4n square plus 6n. Okay, so I can be wise and I can try to find out using a formula or through a bit of understanding कि भाई मैंने white tiles निकालनी है, so I can subtract the gray tiles on the total tiles. Okay, in any case, let's go back. In pattern P, the total number of total tiles is equals to 8 times the gray tiles. Okay, find P. So I'm trying to find an unknown pattern. So मैंने कहा कि पहले मैं total tiles का formula लिख देता हूँ यहाँ पे that I have been given in the question, and let me write down gray tiles. Gray tiles were 4n plus 6. Okay, I need P, so I'm going to write 4p squared 10p plus 6, 8 times 4p plus 6. Let's try to solve quickly. This question is about just solving a quadratic equation, nothing else. Okay, so I have A, B, C. I don't need to factorize. I can use my quadratic formula, minus B plus minus
b square minus 4ac over 2a. I get it 7 and minus 3 over 2. Okay, those are values for p. So obviously 7th pattern हो जाएगा. Minus 1.5 pattern तो नहीं हो सकता. So yeah, so you see a 12-mark question. I've done a complete 12-mark question for you on number sequences. So yeah, good question, tells you a lot about all the different types of ideas that could be there in a question. Any problems? Should we go to the next one? चलिए ये वाला देखते हैं. It says the diagram shows patterns made from crosses X and circles O. Draw pattern 5 on the diagram. So yeah, so generally ये नजर आ रहा है कि 1 2 क्रॉस हैं, 3 क्रॉस हैं, 4 क्रॉस हैं, तो अब 5 क्रॉस आएंगे. तो मैं 5 क्रॉस लगा देता हूँ पहले. और यूं भी 5 बनेंगे. ओके, और फिर ऑल्टरनेट लगे हुए हैं. सो क्रॉस क्रॉस. सही है. यूं 4 टर्म्स हैं तो यूं अब 5 आ जाएंगी. 1 2 3 4 5. ओके, ड्रॉ पैटर्न नंबर 5 हो गया. नंबर ऑफ क्रॉसेस. सही है. क्या मुझे कुछ नजर आ रहा है पैटर्न? तो मैं देख लेता हूँ. +2 +3 +4 +5 होना चाहिए. फिर +6 होना चाहिए. काउंट भी कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सही है. 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay, so I've got the totals. अब मुझे पता है कि total number of crosses and circles mark कर दिए, तो मैं इसे subtract करके भी आंसर ला सकता हूँ ना. So this is going to be 25 minus 15, that's going to give me 10, and 36 minus 21, that's going to give me 15. Okay, find an expression in terms of n for the total number of the circles and crosses in this pattern. Okay, total number of crosses in this pattern. तो मैंने कहा ये लिख लेता हूँ. वैसे तो can someone see the answer directly? Does someone recognize this pattern directly? क्योंकि देखें 1 मार्क का सवाल है. मैं अपने नॉर्मल तरीके से तो कर ही लूंगा, but there is an easy way of doing it as well. Anyone who recognizes this pattern? It's n squared. Mariam is right. N squared है. सही है. डायरेक्ट n स्क्वायर आएगा आंसर. सही है. तो मरियम मुझे पता चल गया n स्क्वायर आना है आंसर. मैं अपना फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करके देख लेता हूँ. मैं कहता हूँ कि nth टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक निकालनी है. nth टर्म ऑफ क्वाड. तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट लेवल डिफरेंस इनटू n minus 1 प्लस सेकंड लेवल डिफरेंस डिवाइड बाय 2 n minus 1 n minus 2. तो ये बना 1 plus 3n minus 3 plus n square minus 3n plus 2. So ये बना 3n minus 2 plus n square minus 3n minus plus 2. कैंसिल हो गए. तो n स्क्वायर रह गया. जो डायरेक्ट भी मुझे नजर आ रहा था, मरियम ने स्पॉट कर लिया था डायरेक्टली कि भाई ये तो स्क्वायर की सीक्वेंस है. ये 1 स्क्वायर्ड है, ये 2 स्क्वायर्ड है, ये 3 स्क्वायर्ड है. तो देखें, कभी आपने रेकग्नाइज कर लिया पैटर्न तो आप डायरेक्ट लिख दें. सही है. आपने डायरेक्ट लिख दिया. या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा काम करेगा. बस बात छोटी सी ये है कि भाई 1 मार्क का सवाल है, तो क्या आपको फॉर्मूला इतना तेजी से याद हो गया है जिस तरह मुझे याद हुआ है कि आप फौरन से लगा सकें? नहीं हुआ तो याद कर लें.
अगर हो गया है, well and good, you can go on ahead and attempt it directly. Okay, does that make sense to everybody? Okay, ये कहता है an expression in terms of n for the number of crosses is this. How many crosses are there in pattern 30? अब उसने nth term का आपको फॉर्मूला बना के दे दिया, वो कह रहा है 30th पैटर्न निकालो. 30th पैटर्न निकाल लिया मैंने, कोई मसला नहीं है, n की जगह 30 लगा दिया मैंने. क्या बना, ये कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, मुझे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. 465 बन रहा है. ओके, अगर ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने को कहता तो आप यही लगा देते इस पे. आप कहते हैं कि इसमें आता नंबर ऑफ क्रॉसेस है ना 1 प्लस वट एवर द फर्स्ट लेवल डिफरेंसेस. अभी मैंने टर्म्स नहीं लिखी इसलिए मैं नहीं कर रहा. वो कह रहे, अब वो कह रहे शो दैट द नंबर ऑफ सर्कल्स. चलो जी सर्कल्स का लिखते हैं. सर्कल्स कितने हैं? 0 1 3 6 10 15. 0 1 3 6 10 15. तो मैंने कहा कि ये डिफरेंसेस निकालना शुरू करता हूँ. 1 2 3 4 5. 1 1 1 1. तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. 2 लेवल ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं मेरे पास. 2 लेवल ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं. मैं अपना क्वाड का सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना शुरू करता हूँ. फर्स्ट टर्म plus first level difference into n minus 1 plus second level difference divided by 2 into n minus 1 into n minus 2. ये बना n minus 1 plus half n square minus 3n plus 2. अब बताओ क्या फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ या नहीं हुआ? मुझे तो लग रहा है हो गया है. ओके, ये बन गया हाफ एन स्क्वायर और माइनस 3n over 2 प्लस n. तो माइनस 1.5 प्लस 1 जो होता है वो माइनस हाफ होता है. तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला. सही है. तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, आता है अक्सर. Okay, then says the number of crosses in pattern M is equals to 5m. तो number of crosses का फॉर्मूला ये रहा. number of crosses का फॉर्मूला मैं ऊपर से बोरो कर लेता हूँ. Any confusions? Okay, the number of crosses is 5m. So half m square plus half m. पैटर्न m में 5m है तो मैंने 5m यहाँ पे लिख दिया और n की जगह पैटर्न m लिख दिया. अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. मुझे लगता है कॉमन डिनोमिनेटर लेने से थोड़ी सी जिंदगी आसान होगी, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया. 10m m स्क्वायर प्लस m, ये हो गया m स्क्वायर माइनस 9m. m कॉमन लूंगा, m माइनस 9. सो m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 9 इक्वल्स टू 0. m इक्वल्स टू 9. सिंपल सवाल के 3 मार्क्स दिए हैं उससे. सही है. किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसके जो है वो मैंने आपको फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाए थे. ये जो शुरू में सीक्वेंस मैंने की थी आपके लिए, अब ये वाली मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको. इसका पार्ट 2 में पार्ट बी से मैं दोबारा पिक कर लेता हूँ इसको. उसने कहा कि here is another sequence. सही है. The pth term, अब nth term नहीं है, p लिख दिया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, नहीं है. उसने कहा is p square plus 4. Write down an expression of 10 in terms of n for the pth term of these sequences. 1 मार्क का सवाल है. सही है. तो पहले तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं चेक कर लूं कि कैसी सीक्वेंस है ये. अगर क्वाड्रेटिक है तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा.
मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है ये, क्योंकि दो लेवल ऑफ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट लेवल डिफरेंस इंटू n माइनस वन प्लस सेकेंड लेवल डिफरेंस डिवाइड बाई टू इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ओके, सो ये बना -2 प्लस 3n माइनस थ्री प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस टू। So I get ओके n स्क्वायर माइनस थ्री यानी p स्क्वायर माइनस थ्री आना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या किसी को ये समझ आया कि एक मार्क का सवाल है तो इसका कोई डायरेक्ट भी आंसर हो सकता था? Can somebody think of a method where I could have gotten a direct answer? मैंने आपसे कहा ना कि जरूरी नहीं होता कि हर जगह फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा हो। Does someone see a relationship between this sequence and this sequence? What is the relationship between these two sequences? Do you see a relationship? इस सीक्वेंस से इस सीक्वेंस पे आने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, 5 और -2, 8 और 1, 13 और 6, क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है? 7 का। सही है, ज़ुहैर इज टेलिंग अस कि -7 हुआ हुआ है सर। तो अगर इसका फॉर्मूला जो था वो पी स्क्वायर प्लस 4 था, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस 4 -7 होगा? ये हो जाएगा पी स्क्वायर -3। ये देखें, वही आंसर आया जो मैंने अपने फॉर्मूला से निकाला। तो कभी कभार मैं डायरेक्ट नंबर्स को देख के जज कर सकूंगा। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, you will probably be able to see the relationship between sequences in a lot of cases. सही है, I am going to show you this. अभी मैंने जो relationship दिखाया वो मैंने -7 का दिखाया between the two sequences that I was given. इसका फॉर्मूला पता था, तो इसका फॉर्मूला मैंने सिर्फ ये कह दिया कि -3 करके आ जाएगा, -7 करके आ जाएगा सर। सही? किसी को बात ना समझ आई हो तो प्लीज इंटरप्ट एंड आस्क। I would be more than willing to answer questions. ओके, अब उसने ये वाला फिर से देखो, 1 मार्क का सवाल। तो अब मैं क्यों ना डायरेक्ट करने की इसको कोशिश करूं। मैंने कहा मेरा ये सीक्वेंस था और ये दूसरा सीक्वेंस मुझे दिया हुआ है, मैं देखता हूँ कि क्या रिलेशनशिप मुझे कोई नजर आता है या नहीं आता। कोई रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है? 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 8 और 12 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 13 और 6, ये 8 का डिफरेंस है और ये फिर 10 का डिफरेंस है। तो ये अब डायरेक्टली करना मुश्किल है, बट मुझे ये नजर आ रहा है कि जो भी ये टर्म थी उसमें 2 टाइम्स करके कुछ ऐड हुआ है। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट आंसर इसका बताऊं तो ये आना चाहिए, +2p आना चाहिए। अगर आपको नहीं नजर आ रहा डायरेक्ट आंसर, तो आप वही वाला मेथड करें जो मैंने आपको फॉर्मूला से सिखाया है। मैंने आपसे कहा ना कि फॉर्मूला हमेशा काम कर जाएगा, फॉर्मूला में कोई मसला नहीं होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। फर्स्ट लेवल डिफरेंस, सेकंड लेवल डिफरेंस। देखें, लिनियर सीक्वेंसेस कम आती हैं, एक पार्ट में कहीं आ रही होगी, ज्यादा क्वाड्रेटिक दी हुई है पेपर के अंदर। ओके, तो मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट लेवल डिफरेंस इनटू n-1 प्लस सेकेंड लेवल डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इंटू n-1 n-2। ये मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड से कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ। सही है, मैंने ऊपर आंसर आपके लिए लिख दिया है। अब आप देखिएगा मेरा आंसर मेरे फॉर्मूला से भी सेम ही आएगा।
So I get n square plus 2n plus 4. p की फॉर्म में लिखूं तो p square plus 2p plus 4. Same आया? Makes sense? Any questions? Okay. I have 2 more questions to go. Let's quickly try to do these. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Hassan, I'm going to send out the PDF वैसे अभी. Don't worry. You'll get the PDF as long as you're on the group. Does someone have an iPhone in my contacts? In the attendees right now? किसी के पास iPhone है? It's going to be easier to send someone on an iPhone who can forward it to the group. If you have one, just let me know. मैं आपको भेज दूंगा and then you can forward it to the group. Okay. Draw pattern 4. थोड़ा complicated सा है, but draw करने की कोशिश करते हैं. यूं 4 लाइनें आनी चाहिए. तो मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करता हूँ. मैं कहता हूँ 1 2 3 4. फिर 1 2 3 4. सही है. फिर ये यूं करके और ये यूं करके, ये यूं है, यूं है, so yeah, that is what my pattern 4 looks like. Okay, मैं काउंटिंग करता हूँ, निकाल लेता हूँ तो आ जाते हैं. Okay, कहता है complete the table for the number of short lines in this pattern. सही है, तो मैं गिन लेता हूँ. वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी कुछ पैटर्न चल ही रहा है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. tells me 28. अगला नहीं बना हुआ, मैं देख लेता हूँ कि क्या सीक्वेंस बनी हुई है. +8 हो रहा है, +10 हो रहा है, तो +12 हो क्या आएगा? नहीं सॉरी, हाँ सही. I've made a mistake, sorry. It's +6. Okay, 6 8 10 12, तो ये 40 आना चाहिए. Find an expression in terms of t for the number of short lines in pattern t. So I can see that it's a quadratic sequence again. So +2 +2 +2. फिर से वही फॉर्मूला. ये है कितना यूजफुल फॉर्मूला है कि भाई फर्स्ट टर्म हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहा है. फर्स्ट लेवल डिफरेंस इंटू n-1, t लगाना है, मैं बाद में लगा दूंगा. सेकेंड लेवल डिफरेंस डिवाइड बाय 2, n-1 n-2. I think this cancels out. n square minus +3n आ रहा है मेरे पास. सही है. So my formula is n square plus 3. अच्छा sorry, t square है. I have to write in terms of t. ऐसे कहा है pattern t. So t square plus 3t. Okay. Same formula again. मिल गए मुझे सारे मार्क्स जो मुझे मिलने थे. Okay. This is the last question for today. Just give me a moment.
Okay. Complete the table for the pattern in this sequence. How many dots do I see? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4 by 6 is 24. Okay. मैं अब अगले के लिए मैं डिफरेंसेस निकाल लेता हूँ. 5 है, 7 है, 9 है, तो 11 होना चाहिए. Okay. Find an expression in terms of n. फिर से वही सवाल. First term, I'm bored of this question now. It keeps repeating. You can see how important it is. It's an easy 10 marks if you just remember one formula. बाकी सारा तो question easy होता है वैसे भी. सही है. ये ब्रैकेट हमेशा एक्सपैंड होकर n square plus 3n n square minus 3n plus 2 ही बनेंगे हमेशा. So अगर n square 5n minus 3n is 2n and वो खत्म हो गया. Okay. Then it says Ken has a bag containing 1, 3, 5, 8 counters. He makes the largest possible pattern in this sequence, pattern P, using these counters. Find the value of P. So मैंने कहा कि number of counters is n square plus 2n, so it's equals to 1, 3, 5, 8. मैं इसको calculator पे ABC लगा के quadratic formula से solve करता हूँ. minus b square minus 4ac over 2a, और मैं देखता हूँ कि भाई nearest whole number मेरे पास क्या आता है. Do I get somewhere close to the number that I'm required? Okay, so मैंने ये लिखा, calculator पे लगाया मैंने 1 2 minus 1 3 5 8. मेरे पास आ रहा है 35.86. सही है. सो पॉजिटिव में आ रहा है 35.86. सो मैं 35th पैटर्न बना सकूंगा ना. 36th पैटर्न नहीं बना सकता बिकॉज देयर आर इनसफिशिएंट काउंटर्स. तो मैं 35th पैटर्न बनाऊंगा. Does everybody understand this? उसमें काउंटर्स कितने इस्तेमाल होंगे मैं वो भी आपको बता सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ 35 स्क्वायर प्लस 2 times 35. सही है. योर आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस पार्ट ऑफ कोर्स. कि अगर आपने प्रीवियस पार्ट सही नहीं किया तो अगला पार्ट भी सही नहीं होगा. आपका पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते आपको. तो यहाँ पे जो है वो 1295 काउंटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं. सही है. या तो मैं ट्रायल एंड एरर बहुत सारे नंबर्स निकाल के जी आप इसमें आगे चलते जाएं आपको पता चल जाएगा. दूसरा तरीका ये है, लेकिन वो बहुत दूर जाके कहीं नंबर आ रहा होगा. तो बेहतर है फॉर्मूला को यूज करेंगे और 1358 इक्वल्स टू लगा के. फिर इसने कहा he uses all the remaining counters to make another pattern in the sequence, pattern Q. अब रिमेनिंग काउंटर्स कितने हैं तो पहले मैं फाइंड करता हूँ कि यूज्ड काउंटर्स कितने थे. अभी मैंने निकाला भी था. आई डिडंट नो आई हैड टू डू इट इन द अदर पार्ट. 35 square plus 2 times 35. 35 square is what? 1295. Remaining कितने रहे? 1398, 1358. 1358 minus 1295. 63. Okay. So फिर से मैंने कहा कि n square plus 2n should equal 63. So n square plus 2n minus 63. एक और पैटर्न बनाना है ना. मैंने एक और पैटर्न बना लिया. तो ये आ रहा है n equals to 7, n equals to minus 9. So मैं कहूँगा 7th पैटर्न बना ले वो. सही. Any questions all through this while? Can you give me feedback on the class? Was the class productive? Any questions?